Today we are going to study inverse Laplace transformation. In the previous lecture, we have studied inverse Laplace transformations, basic property. These are four in numbers. Now we are going to study inverse Laplace transformation of derivative integrals and the function multiplied by p and function divided by p. So same as we have studied in Laplace transformation. Now what is the formula of if and we can say inverse Laplace transformation of derivative it says if L inverse f of p x is equals to f of x यदि f of p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन f of x है then L inverse f of n p n time derivative of f p either we can write it as L inverse d n over dpn और f of p फंक्शन का n टाइम डेरिवेटिव है इसका इन्वर्स है विच इज इक्वल्स टू -1 की पावर n x की पावर n f of x. This comes from the Laplace transformation of function f x multiplied by the x की power n. Then if we find the Laplace transformation of x की power n of fx and then taking the inverse, then we will get the Laplace inverse over f of np. Similarly, inverse Laplace transformation of integral ये क्या कहता है same if R inverse f of px is defined as f of x, then Laplace inverse over p to infinity f of u du f is f of x over x where this f of x over x limit x tends to 0 exist. अगर कोई फंक्शन है f उसका अगर we have Laplace inverse over function f of p is equals to f of x, then अगर हम इस f of p है changing the variable due to the limits p to infinity, अगर इस इंटीग्रल का हम Laplace inverse फाइंड करेंगे तो this is equals to f of x over x. This comes from the Laplace transformation of function f x divided by the sum power of x की power n. अगर हम इस फंक्शन का Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और देन इसका इन्वर्स लेंगे तो we will get this. So you can use the Laplace transformations basic formulas and in the find the Laplace inverse over these. Now the third formula is inverse Laplace transformation of functions multiply by p. जो हमारा p है अगर उससे मल्टीप्लाई है यानी we can say that if R inverse f of p inverse Laplace transformation of f of p is defined as f of x, then Laplace inverse over p f of p is equals to f this x and f of 0 equals to 0. This must be given here f of 0 equals to 0, then L inverse p of f of px equals to f plus x. इसको हमने कहाँ से फाइंड किया
सिमिलरली अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो उस फॉर्मूला को आप यहाँ पे लिखो, देन उसका इन्वर्स लो। ये आपको ये गिवन है एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, देन आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाई बाय पी है विच इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। सिमिलरली आप एफ डबल डैश एक्स यानी पी स्क्वायर एफ ऑफ पी फाइंड कर सकते हो, पी क्यू एफ ऑफ पी, दोज यू कैन फाइंड फ्रॉम द taking inverse over f dash x. Similarly, inverse Laplace transformation of function multiply divided by function divided by some power of p. So it says if L inverse f of p x equals to f of x, then L inverse f of p over p is equals to L inverse f of p over p is equals to power 0 to x f of u du, where this f of p, where this f of p over p limited p tends to 0 must exist. अगर हम इस f of p over p में p को 0 पे टाइम करें तो ये एग्जिस्ट होना चाहिए। उसी केस में हमारा लाप्लास इन्वर्स ओवर f of p over p इज इक्वल्स टू 0, सो f of u du। अगर यहाँ पे f of p over p स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन आ जाएगा विच कम 0 to 1 x1 du1, you can write in any way. Similarly n टाइम हम इसे कर सकते हैं। तो these are the formulas of finding the Laplace inverse. Now we will understand this by solving some examples. Let us take some examples. That we have to given that question, find the Laplace inverse over p over p square plus a square का होल स्क्वायर। हमें यहाँ f of p है वो हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, f of p इक्वल्स टू p over p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। माना अगर ये f of p है तो ये ऐसा हो गया हमें, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो p और p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का होता है। लेकिन हमें इतना तो पता है, अगर हम एक फंक्शन लें प्लस अगर हम इसको f ऑफ p माने, लेट अगर हम इसको f ऑफ p माने 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश p फाइंड करें तो विच इज व्हाट 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर 1 देन 0 माइनस p का करेंगे तो इट्स 2p। तो here we will get f dash p equals to minus 2p over p square plus a square का whole square। Here this term p over p square plus a square, we have to find the Laplace inverse over this function. So we can apply here this formula, that L inverse f dash p x equals to minus 1, इसे we can write f dash p then minus 1 की पावर n equals to 1 है, ये n equals to 1 minus 1 की पावर n x की पावर n f of x, and we can write minus x f of x. Now if we taking this is equals to f of p, then what will we get here? What is the f of x? Which is what? L inverse f of px. ये किसका होता है? ये 1/a sin x का होगा। ये तो क्लियर है। sin x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? a ओवर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ a नहीं तो 1/a sin ax ओवर ax। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज इक्वल्स टू माइनस
x f of x क्या है आपका 1/a sin ax. This is your Laplace inverse. In the question, in the exam, there are several ways of solving this. You can solve this. You can, if you find any other way to solve the question, you can solve it by. लेकिन if in exam there is a clear instruction, then you have to solve it using derivative formula. Then you should apply derivative formula. Otherwise, you can apply any other formula of solving this question. Now this is what? This is our L inverse f dash of p x, which is what? Here the L inverse f dash p is minus ka p over a, so it can be written as L inverse f dash p is what? Minus 2p over p square plus a square ka whole square x, which is equals to this minus x over a sin ax. We have to find only p over p square plus a square. So it can be the L inverse p over p square plus a square का whole square x is equals to minus का 2 sin this is x over 2a sin a. Since minus sign, get it minus 2 is going there, then minus plus and 1/2. This become Laplace inverse over p square plus a square of equals to x over 2a sin ax. Let's take another example. Here the question is, we have to find the Laplace inverse over a square over p into p plus a का whole square x. हमें ये फाइंड करना है. Here this हमें इसका Laplace inverse फाइंड करना है. देखो जब a स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम बेसिकली Laplace inverse 1/p plus a का होल स्क्वायर फाइंड करना है यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. दिस p plus a स्क्वायर यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज L इनवर्स a स्क्वायर को हम बाहर ले लें, दिस इज कांस्टेंट a स्क्वायर, दिस इज 1/p इंटू 1/p प्लस a का होल स्क्वायर इंटू x. नाउ हम इस 1/p प्लस यानी इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर ले, जैसे f of p over p, L इनवर्स f of p over p के फॉर्म में चेंज कर ले. तो यहाँ पे हमारा f of p है वो क्या हो गया 1/p प्लस a का होल स्क्वायर. यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी कैन राइट इज e raised to the power minus ax और L इनवर्स ओवर 1/p स्क्वायर which is what x e raised to the power minus ax. तो L इनवर्स यानी हम इसका लाप्लास फाइंड करें. अगर हम यहाँ पे इसका इनवर्स ले रहे हैं, L इनवर्स ओवर f of p x is equals to L इनवर्स ओवर दिस फंक्शन. तो लाप्लास इनवर्स ओवर f of p यानी f of p को हमने 1/p plus a square डेट का मान लिया. तो दिस इज आवर L in e की raised to the power minus x e raised to the power L inverse 1/p a square. Using the shifting property here, this 1/p square is what x की पावर है ना फैक्टोरियल n, तो n plus 1, तो दिस इज x over factorial 1 x e raised to the power minus x. We have get here f of x is what, which is equals to, this is our f of x. We have got here f of x equals to x e raised to the power ax. Now the formula of L inverse f of p over p x is what
0 to x f of u du. So here what is our f of x? This. So we can write it 0 to x f of u, changing x into u e raised to the power minus au du. And solving this integral, you will get here a square is outside of this, L inverse a square. This is outside of the function. So you can write is in the form if you solve this integration using the rule, then you will find the Laplace inverse over this function. Here a square, a square को हमने छोड़ दिया था अभी, सिर्फ हम Laplace inverse over f of p और p फाइंड कर रहे हैं. Solving this integration, we will get 1 minus e raised to the power minus ax x plus 1 a x plus 1 upon a square. Now we have to find in our question there is also a square L inverse f of p over p. That is what now? Multiply by a square, we will get a to the power minus ax plus 1. This is our solution of the question. Then we have this question 1 upon p plus a का we have to find the Laplace inverse of this function 1 upon p plus p minus a का whole cube. There are various methods. First method we are using a first shifting property. We can write this L inverse over 1 upon p minus a whole cube can be written as a to the power ax 1 upon p cube x, which is equals to 1 x square over 2 to the power ax. This is a very easy formula. Now secondly, you can use it. You can solve it by derivative method. So in the exam, if there is said to you that you have to solve this using derivative method, then you have to apply only derivative method. If there is not mention any method, then you can solve it by using first shifting property. So this depends on you. There are many several methods for solving the inverse Laplace transformation. Now there is a method, partial fraction method. पार्शियल फ्रैक्शन करना हम सबको आता है, हम सब ने किया है. जब हमें अलजेब्रिक इक्वेशंस गिवन होती हैं, दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस दैट वी हैव टू गिवन दैट p square that we have to given that 3p plus 16 over p cube minus
p square minus p minus 6. We can solve this equation. We can write it factors and then we can write it some additions and multiplication of factor in easy form. तो दैट इज़ आई थिंक हम सब ने पहले पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शंस करना. पार्शियल फ्रैक्शंस हम कैसे करते हैं, जैसे ये हमारे पास है 3p plus 16 और दिस इज p स्क्वायर माइनस p माइनस 6. हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं बेस के. तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 6, तो ये हो सकता है शायद p माइनस 3 इंटू p प्लस 2, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2p माइनस 6. दिस इज p माइनस 3 इंटू p प्लस 2. इसके फ्रैक्शंस हो गए. नाउ इट कैन बी रिटन एज, नाउ यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वी कैन राइट इट एज 3p over 16 p minus 3 p plus 2 can be written as a over p minus 3 plus b over p plus 2. हम ऐसा कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो हमारा है उस डिनोमिनेटर को हमने a और b, यानी हम इसको, सिंस यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस हैं, p माइनस 3 फैक्टर है, p प्लस 2 फैक्टर है, तो दिस कम ये कब आएगा जब p माइनस 3 एंड p प्लस 2 दो अलग अलग हमारे पास पार्ट्स फ्रैक्शंस हैं और उनका हम एडिशन करें तो जो डिनोमिनेटर हमारा p माइनस 3 p प्लस 2 हो जाएगा. तो ये हमने माना कि ऊपर यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये a एंड b ऐसे हैं कि अगर हम इनका एडिशन करते हैं तो ये हमारा 3 प्लस 16 के इक्वल टू आना चाहिए. तो यूजिंग दिस वी कैन राइट इट दिस हियर a p प्लस 2 प्लस b p माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ क्या आएगा हमारा 3p प्लस 16. अगर हम 3p प्लस 16 को इक्वल मान दें, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p और फाइंडिंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. You can write it at, अगर हम यहाँ पे p equals to 3 लेंगे, taking p equals to 3, this term is 0 and this is 5a. This become p equals to 3 into 19, this is 25 equals to 5a. We will get here a equals to 5. If we put here p equals to minus 2, then this is what p equals to minus 2 by this term is 0 and this is minus 2 minus 6. This is tan equals to minus 16 tan and this is b minus 2. This is minus का 5b. So we get here b equals to minus का 2. So we can write that this 3p plus 16 over p minus 3 p plus 2 equals to 5 over p minus 3 plus b equals to minus, this is minus 2 over p plus 2. Now we have to find Laplace inverse over this function. Laplace inverse over this function, which is equals to what? L inverse over 5 over p minus 3 x plus L inverse 2 over p plus 2 x. Using the first shifting property, this can be written as 5 e raised to the power minus 3, this is e raised to the power 3x 1 upon which is 1 plus this is minus sign. So here this is minus 2 p plus 2, this is e raised to the power minus 2 1 upon 2 this is 1. So this is here we will get 5 e raised to the power 3x minus 2 e raised to the power minus 2x. This is our Laplace inverse over 3p plus 16 over p minus, here we can have p square minus p minus 6. तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से आप कोई भी क्वेश्चन का इन्वर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो ये बहुत इजी हो गया इसे फाइंड करना. तो यू कैन फाइंड एनी क्वेश्चन
यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो जब आपको नहीं गिवन हो तो सबसे ईजी रहता है कि आप उसके फ्रैक्शन करिए और उसका इन्वर्स फाइंड कर लीजिए, सबसे ईजी मेथड है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।